Sat Shri Akal and welcome to the CSSing channel, where computers, science, and exploration meet each other. So, without further delay, let's get started. सो वी आर एट लर्निंग जेसन. हमने एक छोटा सा ऑब्जेक्ट बनाया पर्सन नाम का, उसको तीन एट्रीब्यूट्स दिए हैं या फिर यू कैन से सम थ्री डिस्टिंग्विश वैल्यूज. वन ऑफ देम इज नेम, एज, अदर इज एज एंड नेक्स्ट इज रोल नंबर. दीज आर जस्ट एग्जाम्पल सिनेरियोज. सो लेट्स सी कि अगर हम इस ऑब्जेक्ट को लॉग पे प्रिंट करते हैं तो व्हाट हैपन्स. ओके, first I will need to change the directory because I am currently in the root directory. Let's change it to the current folder random1 and then implement this. We are learning node, of course, so we will run the node command followed by this demo file name. Okay, so here we have एक ऑब्जेक्ट जिसके अंदर हमें तीनों एट्रीब्यूट्स मिल रहे हैं, राइट. बट यहाँ पे थोड़ा ट्रीट डिफरेंटली कर रहा है. स्ट्रिंग को ग्रीन हाईलाइटिंग मिली है, नंबर को येलो मिला है, एट्रीब्यूट नेम्स और करली ब्रेसेस को जस्ट ग्रे हाईलाइटिंग मिली है. मतलब इट इज़ सम काइंड ऑफ स्पेसिफिक अरेंजमेंट फॉर ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑन द टर्मिनल. सो व्हाट इफ वी कन्वर्ट इट इनटू जेसन. अब जेसन में कन्वर्ट करना है तो जेसन के लिए भी वी हैव वी कैन सी हियर npm. ऑफ कोर्स हमें जिस भी चीज़ को यूज़ करना है मैक्सिमम टाइम वी विल बी जस्ट हिटिंग द डॉक्यूमेंटेशन टू फाइंड आउट कि व्हाट इट इज़ एंड हाउ इट वर्क्स. तो जेसन है तो जेसन के लिए भी एक ना एक npm मॉड्यूल तो डेफिनेटली होगा ही. सो हियर वी गो, जेसन. यस, वी हैव इट. आई गेस एक पैकेज काफ़ी बड़ा है. ओके, one thing to remember, JSON is actually a JavaScript inbuilt you can say module or some package, so we don't need an external package from npm. This JSON is not what I'm talking about because what I was expecting was capital JSON, which is not this one, so we can directly use it. Yes, we can directly use it. It is visible in commands as a suggestion, so it is definitely available. सो व्हाट विल डू कि सिंपली इसको कन्वर्ट करेंगे हम, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको कन्वर्ट करेंगे इनटू अ जेसन. जेसन आर नथिंग बट सम काइंड ऑफ स्पेसिफिक नोटेशन फॉर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स and it can be made by passing the object to json.stringify method. Here we pass the method function and here we have it. So let's see कि फ़र्क क्या आता है टर्मिनल पे उसे प्रिंट करते वक्त. Yes, so now the whole thing is actually treated as a set of string, and even the values and the attributes, only the symbols are kept aside. So now we have a JSON, but how do we make the JSON file? So again, being in Node, we have something called as file system module access. First, we need to import it some way, like for example, fs const fs equals to require fs. Because we are using Node, so it is implicitly available. We don't need to hit npm install fs or something, and now we can use it. So fs dot write file. अब write file का हमारे पास asynchronous हमें use नहीं करना है. We will be going for synchronous one because we don't need any asynchronous features right now. What we will do first, we will need to specify the path and basically the file name that you want to create with the exact path where to create it. So if we don't specify a big unique path, what it will do is just create the file in the current directory, so that's okay to us. इसका नाम रखेंगे हम first json dot of course json, एंड उसमें हम चीज़ें पास क्या कर रहे हैं. सो इट इज़ नथिंग बट कि हमारा जो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई का आउटपुट है विच वी पास्ड एज पर्सन, हम उसी को फाइल पे राइट कर देंगे. सिंपल एज दैट. एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. वर्क जस्ट फाइन. दो strings हैं, but now we have the JSON file. Yes, it works right. It actually wrote the data clearly.
छोटा सा पॉइंट टू कंसिडर, भले ही यहाँ पे कलरिंग्स अलग अलग हो गई है बट स्टिल नंबर्स आर केप्ट एज नंबर्स एंड नॉट एज अ स्ट्रिंग. And now what we will do is, like, okay, we have a JSON file and we can easily pass this particular file over the network using any standard network file transfer commands. But how do we read such a file? Because it is not a pure JavaScript object right now, it is some kind of specific notation of it. So what we'll do is, we will simply read the file, because we already have created the file system module and declared it, so we can use it. And what we'll do, read the same file, rather it is gained from the network or just local file system and any kind of transfer. Once we have the JSON file, we can read its data using the read file sync or read file method of file system. And here we pass on the name, which is 1.json. Oh, sorry, my mistake, pardon please. First json.json. सो ओके ओके, लेकिन यहाँ पे ये फाइल रीड हो रही है, बट व्हाट टू डू विद दिस फाइल? सो लेट्स पुट इट in some kind of variable. This will hold the entire string inside the JSON file. And now what we need to do, just create JavaScript object from JSON. So again we will be using the JSON library k methods, but this time we will be using .parse and will pass that whole data, which is nothing but a string of JSON notation. This will return the whole JSON object, but where to store it? My object. Just give a variable name and use it. Now let's log this variable, my object, and let's run it. Technically we should get this first string implemented kind of stuff. Yes, and we get it. Means हमारा JavaScript object to JSON notation success रहा, and JSON to JavaScript object notation JavaScript object conversion success रहा. So we can now definitely use JSON as many times we want and as in any way we can, or we want to. So this ends with the JSON tutorial. So that's all for this one. I will see you in the next episode. Till then, like, share and subscribe. Stay tuned and thanks for watching.